So, what is the relation between horse and Rajputana and royal, like? घोड़ों से हमारे रूह का रिश्ता है। Try for the back to be correct, and it is Kalvi, Bhawani once again. He is hitting a good ball, Bhawani Kalvi. It is Bhawani on the kill, Bhawani in attack, he got. Sir, welcome in the Think 360, and I want to ask, like, how you are in polo game past 25 years. Which was your first game internationally or nationally? Which was it? Well, I would like to welcome 360 to the Mayo Alumni Polo game today. And if I can recall, my first game was a Mayo game, and that's where we are today. And it was a night that all of us, it was me and Rao Saab Himmat Singh ji and Major Raghuvraj Shivraj Singh ji, we were all part of one team. And we could not sleep the whole night because we were so excited that we were going to play on a big proper ground the first time. Okay, so it was in India itself? Or? Yes, it was on this very ground at the Rambagh ground in I would say probably 1998. And my first international game was in 2001, the World Cup playoffs that we played here, and when we beat Pakistan and went for the World Cup to Australia. So it was with the Pakistan, your first international game. Yeah, and I mean to say I was part of the World Cup team, and one of the teams that played in our zone was Pakistan also. Okay, what was your experience in your first internationally polo? Again, I would say it was very, very exciting because I got a call in the night that I was selected and shortlisted for the probables of the World Cup team, and then from there we had an Indian camp, and then the main team was decided. Okay. And it was a great experience, and we played in India in 2001, the playoffs. Okay, so India was winner that time. Yes, we won the playoffs, and whoever wins the playoffs in our zone, Australia was the hosting team. So the host team and whoever wins the zone qualifies for the main World Cup. How old you were that time? I was 18 when I played the first World Cup. Okay. When you play polo, do you use your own horse, or how do you feel while sitting over? घोड़ों से आप इसके अंदर अपना पर्सनल घोड़ा होना बहुत जरूरी चीज नहीं है, बिकॉज घोड़ा खुद एक मैं से बोलूं तो प्रेजेंट के अंदर जीता है वो जानवर, और उसके साथ में आदमी और घोड़े का जो रिश्ता है वो आपको, जैसे आप बोलो कि आपको एक होना पड़ता है, एक जान जब तक आप नहीं होगे घोड़े के साथ, आप एक नहीं होगे तो आप घोड़े के साथ अच्छा राइडर नहीं बन सकते। अच्छा घुड़सवार वही होता है जो घोड़ा और उसके अंदर एक बन जाता है। Because you belong from the Rajasthan, which is a warrior state, and the Rajputana state warrior state. So, what is the relation between horse and Rajputana and royal, like? It were used to war, and horses were used to. घोड़ों से हमारे रूह का रिश्ता है, तो घोड़ा हर समय एक आदमी के साथ रहा है। आप पुराने जमाने से देख लीजिए और आज के टाइम तक, और पुराने जमाने में और आज के टाइम तक अपना घोड़ा बहुत अच्छा साथी रहा है, और पहले ये युद्ध में काम आते थे, और आज अपने कोई भी चीज के लिए घोड़ा हर समय आपके एक अच्छा घोड़ा कभी भी आदमी को अपनी दिल और जान भी दे देगा एक इंसान के लिए वो, लेकिन अपना घोड़ा पूरी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। Tell a little bit history about the polo and significance of this game. Mayo Old Boys Alumni Exhibition game today, and Jaipur has been the center
since the old days, since we can say the golden days of polo in India. And at present, H.H. Padmanabh Singh ji, he is continuing the tradition and keeping the Jaipur flag high. Right. And Rambagh Polo Club is probably one of the top clubs in the Indian polo. Okay. So, how long are you into this game, and how long have you been playing in this game? Well, this is my 25th year that I can recall properly, and I started in Mayo College, Ajmer, and Adi Singh ji was our principal, who bought horses, who introduced horses again to Mayo, and all thanks to him that we all are playing polo at the present date. Okay. Could you share some insights into how the game of polo became so deeply entrenched in the culture uh, and history of the city? Well, I would say in the olden days, all the royalties used to always play, and Jaipur was one of the top teams probably in the world. In the early 30s, they were winning everything around the world in the global, like the top polo that was played in England, and Jaipur was the best team. And we've had late His Highness Man Singh ji, who was 9 handicap. That's one of the best handicaps, one of the top that you can get into polo. So, and like I currently said that at presently, Padmanabh Singh HH, the present His Highness, is a fabulous player, one of the top players in the Indian circuit, and he's doing a great job of continuing the traditions of his family. Right. In today's world, how is polo viewed in Jaipur? How does it compare to other sports or events? Well, I think so. Polo has a great popularity in the Jaipur, in the local society, I would say in the masses also, because when you see the Sirmur Cup, which is one of the most highest handicap tournament that is played in India, in Jaipur, I would say, or probably in India also, and you have great masses, great numbers turning up and watching polo, and the local public is really involved. They know all the players, they know all of them by the names, and they do a great thing. They even personally do a little bit of a betting on each other that which team is going to win. Right. So, can you share some insights into the inception of the Rajputana Polo Club in Jaipur and its role in promoting the sport? Rajputana Riding and Polo Club, that's a club which was started locally, which is just on the outskirts of the Jaipur city. Right. And Mr. Devpal Singh Dujod, he was our basketball coach also, and Dujod family is very well known for their basketball traditions. So he was our basketball coach in Mayo, and he's coached me also. And he's done a great job, and they've come out with a lot of players. Him and his brother Man Singh, who was my batchmate in Mayo, and he was the India basketball captain also. And they were the first ones who started that club, and from then on, they gave polo a lot of local players, a lot of new players in Jaipur. Right. So, what were some of the remarkable achievement of Maharaja Man Singh Ditya in taking Jaipur's polo to its peak during the 1950s and 60s? So since when the new polo that the whole world is playing now, it was by the British from the Manipur. It was played in Manipur on the smaller ponies, and from there East India Company was established first in India, and the Calcutta Polo Club is the oldest polo club in the world, and that's where it became bigger, and British introduced, and from there it became bigger in the whole of India, and all the royalties started to play, and from there it went to England, and then how it spread around all the world. So if you were talking about the Indian, so India is the country which gave the new polo to the whole world. How do modern members of the Jaipur royal family continue to contribute to the promotion and preservation of polo in the city? Well, I would say it's all thanks to the Jaipur royal family who've continued the tradition always. Late His Highness, who I have heard about, is the whole world knows Savai H.H. Man Singh ji, who was 9 handicap, then Brigadier H.H. Bhawani Singh ji, who was also a great polo player, and then after that he adopted the present His Highness H.H. Savai Padmanabh Singh ji is one of the top players, I already said, in the country, and his father also, Maharaj Narendra Singh ji also.
who has been playing recently, and he was a good player. He did really well, and because thanks to him that he at the early ages started his highness into polo. Right. Welcome in the Think 360. Thank you. And I just want to ask, like, how Bhawani Singh ji is in the nature. You are the childhood friend of him. So, how do you see? Um, I think in today's day and age, it is hard to find a person like Bhawani because he is an inspiration. He is a role model, and above all, I think he really raises the bar for the community today. And Bhawani has so many talents, and now with his new phase as representation of our community and the people at large, I trust no better person than Bhawani to lead us there. Do you see a best leader in him? Like, he will be the best representative of community? Because since 25 years he was in London, abroad, and he was playing like out of the society, and now you are seeing him in a turban and a different face. So what do you think about him? For me, I personally think leadership is not actually from a leader, but from the ideals that person sets for the community. And Bhawani actually leads by example by showing how today's modern day people should foresee themselves in the future. It's a fast changing world, and we need people like him to adapt to situations, Yeah. be global when it is required, be local when the leadership requires. So I think he has a complete example set ahead of him, and I wish him all the best to lead and be led by like minded people. Right. One last question. Like, how do you compare him as a polo player and a leader? Like, you are saying him past 25 years, and is he good in the polo to get together the people and in society, in a political phase? I think we can rephrase it as a polo being a team sport. You need to be a team player, and Bhawani has a multifaceted role to play. When he's on the ground, he's a team player, and when he's off the ground, he knows what the objectives are and he knows where he has to take the people that believe in him ahead. So he's both a kind of personality he portrays. So definitely a team player, and where required, he becomes the leader. Thank you so much being with us. You're welcome. Thank you. First of all, congratulations for winning the game. Thank you. And I want to ask, like, भवानी सिंह जी कालवी परिवार और राज परिवार की खूब नज़दीकियाँ रही थी. कल्याण सिंह जी कालवी और राजमाता गायत्री देवी जी भी काफ़ी लंबे समय से दोस्ती रही थी, परिवार एक दूसरे से साथ थे. आप भी काफ़ी लंबे समय से भवानी सिंह जी के साथ खेल रहे हैं. अभी उनको नई जिम्मेदारी मिली है, उसको आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, आपने सही कहा. हमारे जो परिवार हैं, दोनों परिवार बहुत 3 जनरेशन से साथ में जुड़े हुए हैं. जी. मैंने खुद 2 जनरेशन्स तो खुद ही देख लिए. आपके दादा का जो मेरी ग्रैंडमदर के साथ सपोर्ट रहा है पूरे समाज को, जिस तरीके से आपने मेरे परिवार के लिए, मेरे ग्रैंडमदर राजमा साहब जयपुर के लिए खड़ा किया था, वो मैं कभी नहीं भूलूंगा. और उनके लिए जो मेरी ग्रैंडमदर में, पूरे परिवार में जो स्नेह और रिस्पेक्ट है, वो कभी नहीं भूली जाएगी. बट मेरा पर्सनल आपको मैं बताऊं तो मेरा जो रिलेशन रहा है वो भवानी दा से रहा है. बहुत छोटी उम्र से मैं आपसे जुड़ा था, क्योंकि आप अभी तो आजकल आपने नई रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है, बट पहले तो आप पोलो में भी स्टार रहे हुए हैं. तो हम तो जब छोटे थे, हम स्कूल में भी साथ में, मतलब सेम स्कूल में पढ़ाई करी है हमने. तो जब मैंने शुरुआत करी थी मेरे पोलो करियर में, तो आपको देख के काफ़ी इंस्पिरेशन ली थी, और फिर आपके साथ खेलने का भी बहुत मौका मिला. और पिछले 3-4 साल में तो हम लोग काफ़ी सेम टीम में, सेम ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी हमने टाइम स्पेंड किया, और मुझे बहुत सीखने का मौका मिला घोड़ों के बारे में, घुड़सवारी के बारे में, पोलो कैसे खेला जाता है, कैसे दिमाग से पोलो खेला जाता है, और तरह तरीके की चीज़ों में. और आज आपको मैं एक अपने नए रूप में देख रहा हूँ, जो बहुत ही एक इंस्पिरेशन है. और जो मैं हमेशा कहता था, जो युवा पीढ़ी जो है, जिनको
एक लीडर की ज़रूरत है, खास करके इस समाज में, वो आपके थ्रू हमारे को मिल रहा है, तो बहुत एक खुशी का अवसर है। और मैं बिल्कुल भवानी दा को बेस्ट विशेस देना चाहूँगा। आने वाले जो भी आप चुनौती लेंगे उसमें आप विजयी रहें। भवानी सिंह जी ने एज ए खिलाड़ी भी अच्छी जिम्मेदारी निभाई थी और एक नई कम्युनिटी के तौर पे राजपूत समाज की नई जिम्मेदारी अभी इनको मिलने जा रही है, उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? कैसे वो निभा पाएंगे? पहले कैसे निभाते थे अपनी जिम्मेदारी एज ए प्लेयर, और अभी एज ए जो सोसाइटल जिम्मेदारी मिली है उसको कैसे निभा पाएंगे? आई थिंक जो खेल एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको खेल के अलावा ऐसी कितनी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में सीखने को मिलता है। और आपको एक विनर मेंटालिटी जो होती है, हम लोग कहते हैं स्पोर्ट में विनर मेंटालिटी होना बहुत ज़रूरी है। और वो पोलो का एक ऐसा स्पोर्ट है जो आपको विनर मेंटालिटी सिखाता है कि आप इकलौते नहीं हैं, आपके साथ पूरी टीम है। टीम को साथ में लेके कैसे आगे चलना है और कैसे आगे बढ़ना है और कैसे जीत पानी है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से मैंने आपको देखा है पोलो में, और कैसे आप टीम को कैरी करते हैं, टीम को मोटिवेट करते हैं, खास करके उन सिचुएशंस में जब लगता है कि हार पक्की है और हार के मुंह से आप जब विजय चुरा लें, वो एक टेक्निक जो होती है, वो एक कला जो होती है, वो स्पोर्ट आपको सिखाता है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपने जो अभी नया रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसमें आप समाज को ही नहीं, पूरे सर्व समाज को साथ में लेके इस देश के लिए बहुत भला काम करेंगे, जैसे आपके पिताजी ने किया था इतने सालों के लिए। कभी किसी में भेदभाव नहीं किया, सबको प्यार से साथ में लेके आगे बढ़े। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप भी उनके कदमों में बिल्कुल चलेंगे। अभी आप उनको एक नए रूप में देख रहे हैं। पहले एज ए पोलो प्लेयर थे, 25 इयर्स थे, और अभी एक नया गेटअप जो उन्होंने कालवी साहब का लिया है, टर्बन, और वही लाइक रूरल लोगों से कनेक्ट होना, तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक एक बहुत नेचुरल स्टेप है ये, क्योंकि कल कोई और थर्ड आदमी, फोर्थ आदमी ऐसा कोई रोल लेता तो कोई लोग कह भी सकते हैं, बट आप तो बचपन से अपने दादा के साथ रहे हैं और समाज के बीच में रहे हैं। तो एक ये बहुत मैं इसको एक बहुत नेचुरल स्टेप की तरह देखता हूँ। और मैंने आपका काफ़ी स्पीचेस वगैरह भी देखे हैं। आपने कभी नहीं कहा कि मैं एक लीडर के तौर में, हमेशा कहा है कि मैं एक सेवक के तौर में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, जो एक बहुत ही हम्बल और एक अच्छी बात है। तो आई एम श्योर कि आपको बहुत सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच थिंक 360 बिल्कुल, से बातचीत करने के लिए। थैंक थिंक 360 में आपका स्वागत है सर। थैंक यू सर, भवानी सिंह जी कालवी पोलो में एक बड़ा नाम है, 25 सालों से वो पोलो खेल रहे हैं। अभी उनको एक नई जिम्मेदारी मिली है और आप उनके साथ लॉन्ग टाइम से उनके साथ खेल रहे हैं, ग्राउंड पे हैं, तो इस जिम्मेदारी को आप कैसे देखते हैं? आई थिंक भवानी सिंह जी वन ऑफ द स्टार प्लेयर्स रह चुके हैं इंडियन पोलो में, और हम लोग साथ में ही मेरे कॉलेज में करे थे, मेरे सीनियर थे वो जी। और जिस तरह से अब उनका पूरा जो चेंज हुआ है सिनेरियो, और खासकर जो सामाजिक जिम्मेदारी ली है, तो मेरे ख्याल से जिस तरह से उन्होंने पोलो और इंडियन पोलो को जिस स्तर पे वो ले गए, उसी अनुसार मेरे ख्याल से जो नई जिम्मेदारियां मिली हैं उसको भी उसी तरह से वो ले जाएं, और हमारी शुभकामनाएं उनको। एज ए प्लेयर, खिलाड़ी के तौर पे वो कैसे प्लेयर साबित हुए थे? क्या वो टीम को साथ लेके चलते थे? और आपको क्या लगता है कि जब उनको नई जिम्मेदारी मिली है, एक सामाजिक जिम्मेदारी मिली है, तो वो कैसे लीडर साबित होंगे? आप कैसे देखते हैं? आई थिंक शुरू से जो हम स्कूल डेज में थे, वो बहुत ही एज ए लीडरशिप ब्लड में, फैमिली में तो उनका है ही, जो लीडर का पार्ट रहा है, तो एज अ लीडर ही रहे हैं स्कूल के दिनों से, हम लोगों को मोटिवेट करना। और जिस तरह से हम लोग के इंडियन टीम के साथ भी जब ये गए थे, पाकिस्तान गए थे, तो उनका बहुत उन्होंने भूमिका निभाई, और एक सबको एक साथ करके, और उनकी जो चलने का नेचर है, तो आई एम श्योर स्पोर्ट्स जो चीज है वो लाइफ में वही चीजें आती हैं। और अब जिस तरह की जिम्मेदारी में वो आए हैं, मेरे ख्याल से बहुत ही डिफरेंट पर्सनालिटी है उनकी, और वो सबको लेके चलने वालों में से वो एक है। आप कब से उनके साथ जुड़े हुए हैं? कौन सा आपका फर्स्ट मैच था जो आपको याद है कि आप तब से उनके साथ हैं, और आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा था उसमें? मैं भवानी सिंह जी से जुड़ा हूँ 1996 से, जब मैं क्लास 8th में था और वो क्लास 11th में या 10th में थे, तो तब शुरुआत में हमारी मेरे कॉलेज में ही मुलाकात हुई है, और उस दिन से अभी तक हम लोगों का एक बहुत अच्छा एक रिलेशन है। और जिस तरह से हमारा तालमेल गेम में भी रहा है, लाइफ में भी हम लोग बहुत एक दूसरे से बहुत क्लोज हैं। तो कितने साल हो गए हैं मेरे कॉलेज से साथ में उनको। आपका पहला मैच कौन सा था इंटरनेशनली जो आप साथ में खेले? हम लोग साथ में इंटरनेशनली खेले हैं 2003 में, इंडिया में ही खेले थे हम लोग, न्यूजीलैंड टीम थी उसके साथ में। तो ये तो निकल गए थे और मैं मेरे से जैसे आया ही था यंग स्टूडेंट के हिसाब से, तो हम लोग साथ में गेम खेले थे, जयपुर में ही हुआ था 2003 में।
थैंक यू सो मच सर, थिंक 360 से बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच। सर, पॉलिटिक्स टू पॉलिटिक्स, तो ये जो स्विच है इसको आप कैसे देख रहे हैं? अब पोलो स्टिक्स का जैसे आप बोलेंगे तो वो उसका मैं बहुत यूज टू रहा हूँ। जी मेरे लिए 25 साल हो गए जी पोलो स्टिक जब मैंने फर्स्ट टाइम अपने हाथ में उठाई थी मेयो कॉलेज अजमेर में। जी और अब आप पॉलिटिक्स के बारे में बोलते हैं तो मैंने आई डोंट थिंक सो मैं अपने आप को कोई पॉलिटिक्स में बोलूँगा। मैंने जो इस चीज़ को समझा है और जब से ये इतनी बड़ी जिम्मेवारी मैंने जब जाता हुक्म के वहाँ पे जब 12 दिनों में जो लोग बैठने आए थे जी उन लोगों का जो भावना और जुड़ाव और जो उनकी उम्मीद है इस कालवी नाम की तरफ, जी उसी चीज की जिम्मेवारी मैंने समझते हुए कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरे समाज के और उन लोगों के मैं काम आ सकूं, सब जी हर समाज के जो कालवी इस नाम से जो उम्मीद रखता है तो जी, वो मेरी कोशिश रहेगी। क्योंकि आपके फादर साहब एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और बहुत लोग उन पे डिपेंड करते थे, सोचते थे कि एक नाम है जो झट से मदद के लिए आगे आएगा। आप 25 सालों से पोलो में हैं, सडन आप ये गेटअप चेंज होता है। मैंने अभी भी देखा कि आप एक टर्बन में थे, राजस्थानी पोशाक में थे, और जब ग्राउंड में आए हैं तो आप वही आपका जो रेगुलर रूटीन था पोलो खेलने का, आप इसको क्या बर्डन वाइज आपको लगता है कि क्योंकि फैमिली प्रेशर एक होता है कि फादर की वो आगे बढ़ानी है, कहीं वो वाला आपको ऐसा महसूस होता है, या फिर आप इसको एज ए इंटरेस्ट आप खुद की जिम्मेदारी समझते हुए आगे बढ़ाना चाहते हैं? नहीं, आप इसके अंदर पोलो और ये जो जिम्मेवारी है इसके दोनों के अंदर जैसे अपना एक खेल, एक जी आदमी एक मनुष्य के जीवन के अंदर एक खेल से जुड़ाव एक हर समय बहुत मैं बोलूँगा नेचुरल रहा है। जी और वैसे के वैसे मेरे लिए ये जो चेंज ओवर रहा है इसको मैं बहुत नेचुरल और ये मेरी जिम्मेवारी समझ के सिर्फ उसी हिसाब से मैंने इसको ये चेंज ओवर करा है कि जी मैं पोलो और सब चीज मेरी ये जो जिम्मेवारी दाता हुक्म की जो लोगों की, जैसे आपने मेरे से पूछा कि जो लोगों की उम्मीद है इस नाम की तरफ, जी उसके तुलना में मैं हर एक चीज बहुत छोटी समझता हूँ। मैं मेरा पोलो गेम भी उसके सामने बहुत छोटा समझता हूँ क्योंकि जी इसके अंदर हजारों लाखों लोगों की जो उम्मीद है उस उम्मीद के ऊपर मैं मेरी तरफ से कोशिश रहूंगा कि मैं अपने परिवार का नाम को कभी नीचे नहीं जाने दूं जी और अपनी जगह खड़ा रहूं। जी। अभी फादर साहब के जाने के बाद आप करीब 1 ईयर हो चुका है आपको ग्राउंड में नहीं उतरे, और आज अचानक से आपने वही अपना जो रूटीन था 25 साल पहले, मतलब 25 सालों से जो आपका रूटीन था 1 ईयर पहले का था, आज आप उसी गेटअप में हैं। तो क्या थॉट था, और आज उतरने के पीछे क्या रीजन है, और 1 ईयर तक नहीं खेलने के पीछे क्या रीजन थी? आज जैसे आप सबसे बड़ा रीजन अपन बोलेंगे तो ये हमारे एक स्कूल का ओल्ड बॉयज का गेम था आज मेयो कॉलेज ओल्ड बॉयज का। जी और ये ही गेम मेरा इसी ग्राउंड के ऊपर मेयो कॉलेज कप में ही मेरा फर्स्ट गेम एवर बड़े ग्राउंड के ऊपर इसी ग्राउंड पे रहा है। आज जी मैं इसी ग्राउंड के ऊपर फिर खड़ा हूँ जी आप सबके बीच के अंदर, और मुझे इसके अंदर बहुत खुशी है कि मैं इतने गैप के बाद में भी वापस आके खेल सका, बिकॉज ये मेरे लिए बहुत एक नेचुरल चीज है जी जिसको मैं कर सकता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच सर, थिंक 360 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत थैंक यू आप सबको भी, थैंक यू आप लोग पधारे।